बिल्डिंग्स के दरमियान प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये हमने डिस्कस किए थे। सेकंड लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है वो वेरियस मैकेनिज्म्स to dissipate energy imparted to a structure by earthquake. तो बेसिकली अर्थक्वेक के दौरान सीस्मिक वेव्स की एनर्जी जो है वो ग्राउंड से स्ट्रक्चर को ट्रांसफर होती है, और उस एनर्जी को अगर हम किसी तरीके से डिसिपेट कर दें, ज़ाया कर दें, तो स्ट्रक्चरल सिस्टम में डैमेज जो है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं सीस्मिक वेव्स की जो एनर्जीज है उसको एनर्जी को डिसिपेट करने की। मुख्तलिफ मेथड है। एक मेथड है बेस आइसोलेशन का है। बेस आइसोलेशन क्या चीज है, इसको इस एक सिंपल तरीके से यहां मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये एक आम स्ट्रक्चर है जिसमें फाउंडेशन जो है वो सिंपली जमीन के साथ इन कांटेक्ट है। इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को फिक्स्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। और अगर हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ग्राउंड मोशन ये राइटवर्ड इज्यूम कर लें तो ये स्ट्रक्चर अपने मास की वजह से, इनर्शिया की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शियल फोर्सेस इसमें प्रोड्यूस होंगी। वो स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो डिफॉर्म होगा, और जितनी ज्यादा और इनर्शियल फोर्सेस जो है मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर है। तो मास अगर ज्यादा होगा तो भी इनर्शियल फोर्सेस ज्यादा होंगी, एक्सेलरेशन अगर ज्यादा हो तो भी इनर्शियल फोर्सेस ज्यादा होगी, क्योंकि इनर्शियल फोर्सेस जो है मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर है। अब अगर हम ये कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग में फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के दरमियान रोलर्स प्रोवाइड कर लें। अब इस सिचुएशन में अगर ये ग्राउंड राइटवर्ड डिस्प्लेस होता है तो ये स्ट्रक्चर जो है रोलर्स के ऊपर सिंपली लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर डिफॉर्म नहीं होगा। जब स्ट्रक्चर डिफॉर्म नहीं होगा, इससे यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफॉर्म हुआ है, जब स्ट्रक्चर डिफॉर्म नहीं होगा इसका मतलब ये कि कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो कि स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर सके। तो ये बेस आइसोलेशन को बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने की है। मजीद इसकी डिटेल में जाते हैं तो बेस आइसोलेशन, अच्छा ये आवाज तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर ही होगी, कोई मसला तो नहीं है। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लियर है तो इट मींस के ओके। सीआर क्लास में मौजूद है? ये सर क्लियर है। तो बेस आइसोलेशन जो है ये दो तरीकों से हम अचीव कर सकते हैं। एक, हम फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के दरमियान लेमिनेटेड रबर बियरिंग या LRB अगर इंस्टॉल कर ले। दूसरा जो है फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के दरमियान स्फेरिकल स्लाइडिंग आइसोलेशन सिस्टम अगर हम इंस्टॉल कर ले, तो इन दोनों तरीकों से हम बेस आइसोलेशन अचीव कर सकते हैं।
लेमिनेटेड रबर रबर बियरिंग, लेमिनेटेड रबर बियरिंग जो है LRB, बेसिकली इससे होता है कि ये इसमें रबर की हमारे पास लेयर्स होती हैं और रबर की लेयर्स के दरमियान स्टील की प्लेट्स होती हैं और दरमियान में लेट का एक प्लग होता है। कॉन्सिक्वेंटली जब ग्राउंड मूवमेंट की वजह से ये जो LRB डिफॉर्म होगा और सीस्मिक डिफॉर्म किस वजह से होगा कि सीस्मिक वेव्स की एनर्जी जो है इसके जरिए ऊपर ट्रांसफर होने की कोशिश करेगी, तो जो स्टील की प्लेट और रबर के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी। ये लेड रबर जब डिफॉर्म होगा, हीट एनर्जी डेवलप होगी, उसकी वजह से वो एनर्जी डिसिपेट होगी। ये इसका मैकेनिज्म है। यहां पर एक LRB पर एक शेकिंग टेबल टेस्ट ये एक वीडियो में रन करता हूं तो आपको थोड़ा मजीद ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे आप देखें ये लेमिनेटेड रबर बियरिंग है। इस पर ये एक शेकिंग टेबल टेस्ट किया गया। ऊपर कोई या तो वेट रखा हुआ है या कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर इसके ऊपर के साथ कनेक्टेड है। शेकिंग के दौरान आप इसकी ये LRB की डिफॉर्मेशन आप देखें। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये जो LRB है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काफी फ्लेक्सिबल होता है और जब ये डिफॉर्म होता है तो स्टील प्लेट्स जो कि रबर लेयर्स के दरमियान प्रोवाइड की गई हैं उसके साथ फ्रिक्शन डेवलप होती है। इसके अलावा ये दरमियान में लेड प्लग है, ये जब डिफॉर्म होता है इसमें हीट एनर्जी डेवलप होती है और इसकी वजह से सीज्मिक वेव्स की एनर्जी जो है वो काफी हद तक डिसिपेट हो जाती है। ये एक एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसमें कोई बेस आइसोलेशन सिस्टम नहीं है, ये उसमें ग्राउंड मूवमेंट की वजह से उसकी डिफॉर्म शेप, और ये एक स्ट्रक्चर जहां पर LRB हमने प्रोवाइड किए तो उसमें LRB की वजह से जो इसकी डिफॉर्म शेप है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर एज ए रिजिड बॉडी मूव कर रहा है, स्ट्रक्चर इस तरह डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है और वजह उसकी यही है कि जो एनर्जी है वो काफी हद तक ये LRB जो है डिसिपेट कर देती है। इसको एक दूसरी दो वीडियोस के जरिए मजीद मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं।
ये एक शेक टेबल टेस्ट जो कि जापान में किया गया है, एक फुल स्केल रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर, जहां पर LRB प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये उसकी वीडियो है और इसकी परफॉर्मेंस आप खुद ही अभी देख लेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग मुझे जरा आप याद दिला दिया करें, ताकि रिकॉर्डिंग हम कर लिया करें। रिकॉर्डिंग, अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा ये नोट्स लेते रहें, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसमें नहीं हो रही है। しっかりとした構造の建物であれば倒壊を防ぐことができます。しかし、室内はどうでしょう。これは阪神大震災と同じ震度揺れを再現した実在建物による実験の実態です。地震の手を閉めない壁が転倒し、食器が割れるなど被害を受けています。अच्छा, अब यही बिल्डिंग है, लेकिन जब इसमें LRB हम प्रोवाइड करते हैं उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस आप ये दूसरी क्लिप से देखेंगे। आप देख सकते हैं वो एनर्जी चूंकि डिसिपेट हो रही है, और कुछ वजूहात और भी हैं जो कि स्टेज पे एक्सप्लेन करने का कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा। अब जो है LRB की वजह से वाइब्रेशन स्ट्रक्चर में काफ़ी कम हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक LRB यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, एक LRB यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। अच्छा, अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं फिर। सर, ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है? पाकिस्तान में कहीं इंस्टॉल हुए हैं सर ये LRB? ये काफी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, और इसलिए ये आम स्ट्रक्चर में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉस्टली है, वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। स्ट्रक्चर जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। या ज्यादातर अक्सर फॉरेन कंट्रीज में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जिसकी अपनी हेरिटेज वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। पाकिस्तान में एज सच मेरे नॉलेज के मुताबिक किसी स्ट्रक्चर में ये प्रोवाइड नहीं किया गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी टेक्निक जिससे हम बेस आइसोलेशन अचीव कर सकते हैं वो स्फेरिकल स्लाइडिंग आइसोलेशन सिस्टम की है। बेसिकली इसमें होता ये है कि फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के दरमियान इस तरह एक अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाती है जिसमें एक कनकेव सरफेस होती है और स्टील की प्लेट जो कि कनकेव होती है, ऊपर एक दूसरी स्टील प्लेट के साथ
किसी स्पेशल टाइप ऑफ रबर के जरिए कनेक्टेड होती है। अच्छा, इसमें अभी आप मेरी वीडियो देख लें, इसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं कि किस वजह से इसमें जो है ये किस हम बेस आइसोलेशन अचीव करते हैं, या इसका मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसमें शेकिंग जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पर एक मॉडल जो है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए वो टेस्ट किया गया है। एक छोटी सी शेक टेबल है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं दो स्टील के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक ये वाला स्टील का प्लेटफॉर्म है, एक ये दूसरा, और ये दरमियान ये ऊपर वाला जो स्टील का प्लेटफॉर्म है नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर जो सपोर्टेड है थ्रू ये स्फेरिकल स्लाइडिंग आइसोलेशन सिस्टम, एक स्फेरिकल टाइप की सरफेस है, उसके जरिए ये इस पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर दो ग्लास जिसमें कोई लिक्विड पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि जब शेकिंग प्रोवाइड की जाती है तो दोनों ग्लासेस में जो स्प्लैशिंग इफेक्ट है से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से जगह पर शेकिंग कम है, कौन सी जगह पर शेकिंग ज्यादा है। यहाँ आप देखें ये नीचे स्प्लैशिंग इफेक्ट ज्यादा है लेकिन ऊपर नहीं है। इसका मतलब है कि नीचे जो है एक्सेलरेशन ज्यादा है जबकि ऊपर एक्सेलरेशन कम है। अभी ऊपर एक्सेलरेशन क्यों कम हुई है इसका मैकेनिज्म मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, होता ऐसा है ये तो अच्छा, ये इसको आप स्कीमेटिक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये बाल को आप इस ये नीचे स्फेरिकल स्लाइडिंग आइसोलेशन सिस्टम है, इसके ऊपर एक बाल है। अच्छा, अब जब इसमें अगर आप इस बाल को इस पोजीशन से यहां पर ले आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बता सकता है? इस बाल को लोवेस्ट पॉइंट से
जहां पर कम ये हो नजर आ रहा है यहाँ पर इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज हो सही जाएगा। सी पर कम हो जाएगी। अगर आप लोएस्ट पॉइंट को डेटम ले लें तो बाल को अगर आप यहाँ पे ले आए तो अगर ये हाइट h है, लोएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट का फासला h है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, दैट विल बी W इंटू एच। अब अगर आप इसको रिलीज करते हैं तो ये बाल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर होगी? काइनेटिक एनर्जी में। जब ये यहां पर पहुंचेगा तो ये बाल रुकेगा नहीं, बल्कि ये दूसरी साइड पर ऊपर की तरफ राइज करेगा, अगेन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर होगी। अब ये बाल और जो ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके दरमियान फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? दूसरी दफा जब ये बाल लोएस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा तो जितनी हाइट तक राइज करेगा वो हाइट पहले से कम होगी या ज्यादा होगी? सर जी कम होगी, वो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन की वजह से डिसिपेट हो जाएगी, तो दूसरी दफा जब ये आएगा तो ये कम राइज करेगा, तीसरी दफा मजीद कम राइज करेगा। तो स्फेरिकल स्लाइडिंग आइसोलेशन सिस्टम इस मैकेनिज्म पर काम करता है कि ग्राउंड शेकिंग की वजह से जब बिल्डिंग इस इनिशियल पोजीशन पर, पहले बिल्डिंग इस इनिशियल पोजीशन पे होती है लोएस्ट पॉइंट पर, ये जो रबर है, ग्राउंड शेकिंग की वजह से ये बिल्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, फिर नीचे आएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, फिर नीचे आएगी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी भी डिसिपेट होगी और कॉन्सिक्वेंटली शेकिंग जो है वो कम होती जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म की वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी और अर्थक्वेक खत्म होने के बाद बहुत जल्दी वो एनर्जी डिसिपेट भी हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मैकेनिज्म्स भी हैं जिसके जरिए हम सीस्मिक एनर्जी जो है डिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें एक है ट्यून मास डैम्पर। ट्यून मास डैम्पर में ये किया जाता है कि जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, चलें आप बिल्डिंग ले लें, चूंकि बिल्डिंग के साथ आप यूज्ड टू हैं, उसको विजुअलाइज करना भी आप लोगों के लिए आसान है। बिल्डिंग के टॉप पर एक मास सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उस मास की जो वैल्यू है वो प्रॉपरली कैलकुलेट की जाती है। अगर आप कोई भी मास अटैच कर दें तो उसका फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करके वो मास अटैच करते हैं तो उसकी वजह से भी एनर्जी जो है वो स्ट्रक्चरल सिस्टम की डिसिपेट होती है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए आप पूरी देख सकते हैं। मैं एक वीडियो रन करता हूं। यहाँ पर एक मॉडल है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2.62 हर्ट्ज है।
और इसमें ये शेकिंग टेबल जो इसमें शेकिंग प्रोड्यूस करता है उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। अब यही मॉडल है, यहाँ पर प्रॉपरली कैलकुलेटेड 2.3 kg मास सस्पेंड किया गया ऊपर। अभी आप देखें, शेकिंग अभी रिड्यूस हो गई है। अच्छा, इसकी वजह अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है, इसकी वजह क्या क्या हो, किस वजह से ये शेकिंग को रिड्यूस कर रहा है, कोई बता सकता है? सर ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से किससा, इनर्शिया की वजह से किससा ये रिड्यूस हो रहा है? सर जब ऊपर कोई और ज्यादा स्टूडेंट? ज्यादा फोर्स हाँ, सर लगेगा बिल्कुल। सर, जब मास ऊपर अच्छा, सर इनर्शिया उसकी कम होगी सर। और कोई बता सकता है इसकी वजह? हाँ, और कोई वजह? अच्छा, ये इसमें ये चूंकि ये ऐसा होता है कि अगर मैं इसको ये मास सस्पेंडेड है। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये स्ट्रक्चरल सिस्टम लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है ड्यू टू इनिशियल फोर्सेस। ये मास जो प्रॉपरली कैलकुलेट करके सस्पेंड किया गया है, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये मास जो है ये राइटवर्ड डिस्प्लेस होगा। से इनिशियल फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इन द मास इज Fi2, तो रिजल्टेंट इनिशियल फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगी? Fi1 माइनस Fi2। और ये जो मास सस्पेंड किया गया इसका फर्क, इसका क्या फर्क पड़ा इनर्शियल फोर्स पर? इनर्शियल फोर्स रिड्यूस हो गई है और कॉन्सिक्वेंटली जो है तो शेकिंग जो है वो स्ट्रक्चरल सिस्टम में काफी कम हो गई है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, लेकिन याद रखें कि दिस मास शैल बी प्रॉपरली, इसका जो नाम है ट्यून्ड मास डैम्पर, तो ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रॉपरली कैलकुलेटेड है। अगर इस केस में जो है 2.3 kg के बजाय आप 3 kg सस्पेंड कर देते हैं या 1.5 kg, तो फिर वो मकसद अचीव नहीं हो सकेगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए चंद प्रॉब्लम्स है, इसको आप कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस किया जा सकता है नेक्स्ट टाइम। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछे, वरना थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, ये पहले दो लेक्चर जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में कहा था कि ये काफी जेनेरिक है, जेनेरिक इन द सेंस कि इसमें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है लेकिन क्वालिटेटिव टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में ये इंफॉर्मेशन ने प्रोवाइड नहीं की है। और आपका जो एक्चुअल कोर्स है, कोर्स तो आपका खैर पहले मॉड्यूल से है, लेकिन जो एक्चुअल रिलेटेड मटेरियल है मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व है, बाकी चीजें वो थर्ड मॉड्यूल से स्टार्ट होंगी। और चूंकि कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको समझने की। तो जो थर्ड लेक्चर है this is about the fundamentals of dynamic analysis for SDOF systems. SDOF stands for Single Degree of Freedom Systems. Single Degree of Freedom System. What is Single Degree of Freedom System? अच्छा, आपके क्लास में कोई फॉर्मल तो नहीं है? यस सर, है एक इमाद तौफीक है सर। अच्छा, so let me explain in English. In this lecture, we will discuss the fundamental concepts of dynamic analysis for SDOF systems. SDOF stands for Single Degree of Freedom. Now, what is Single Degree of Freedom system? That will be explained. First of all, you must know structural degree of freedom system. So, structural degree of freedom or degree of freedom of a system is defined as the number of independent variables required to completely determine the position of all parts of a system at any instant of time. You have studied kinematic indeterminacy in structural analysis part 2. Can someone describe what is kinematic indeterminacy? काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है, उर्दू में बता दें, पुश्तो में बता दें, जिससे आप कन्वीनियंट हो। सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस जी, रिपीट करें जरा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोमेंट्स। अच्छा, इस पे कोई ऐड करना चाहेगा मजीद? सर स्ट्रक्चर में जिस पॉइंट पे रोटेशन पॉसिबल हो सर, वो
तो जितने पॉइंट के रोटेशन सर पॉसिबल है उसको काइनेमेटिक डिग्री डिटर्मिनेसी बोलते हैं। अच्छा, इसको मजीद कोई अगर थोड़ा रिफाइन कर सकता है, दूसरी डिफिनीशन डिग्रीज ऑफ दूसरी डिफिनीशन है, लेकिन इसको अगर मजीद कोई थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन अ सिस्टम इज कॉल्ड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है? सवाल मेरा अगर ये हो कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर अगर हमारे पास पॉइंट लोड हो ना सर, या रोलर हो सर, हम स्ट्रक्चर में इसी तरह डिफाइन करते हैं, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। इसी तरह सर अगर पेन सपोर्ट है तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है सर, और फिक्स है तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है सर। मतलब मोमेंट जो है ना ये इस एक बीम की सर वो नहीं हो सकती है फिक्स मोमेंट में। ठीक है, सब स्टूडेंट्स ने अपनी एक एफर्ट की है, लेकिन वो अभी मैं ये कह सकूंगा कि उनको मुनासिब अल्फाज नहीं मिल सके एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी भी कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम इज द नंबर ऑफ variables required to completely determine the defined position of a structural system. किसी भी structural system की defined position को ड्रा करने के लिए हमें जितने वेरिएबल्स चाहिए होती हैं उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, चाहे इस पे पॉइंट लोड अप्लाइड है या यूडीएल अप्लाइड है या दोनों अप्लाइड है। इस केस में आप देखें इसकी डिफॉर्म पोजीशन इस तरह होगी। अब इसकी डिफॉर्म पोजीशन अगर आप डिटरमिन मालूम करना चाहते हैं तो आपको एक ये रोटेशन चाहिए, एक ये रोटेशन चाहिए और एक ये रोटेशन चाहिए। दरमियान में डिफ्लेक्शन जो है तो ये अच्छा एनी हाउ, अब इसमें पहला वाला जो सपोर्ट है उसके साथ रिलेटेड ये एक रोटेशन है, दूसरे वाले सपोर्ट के साथ रिलेटेड ये एक रोटेशन है। तो ये अगर आप रोटेशंस मालूम कर लें तो आप इसकी डिफॉर्म्ड शेप ड्रा कर सकते हैं। लिहाजा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस सिस्टम इज 2, which is θ1 and θ2. This is also known as kinematic indeterminacy. Now, if we have a cantilever beam and we have a point load or UDL, in this case, the deformed position, this is the deformed shape is something like this. But if you want to draw the exact deformed shape, you need this deformation. Say this is 1, this is 2. You need this deformation. This is delta 2. And this rotation. At 1, the support is fixed. So rotation, deflection will be 0. So you don't need the values of
deflection, and rotation. So the number of variables to draw the actual deformed shape of this cantilever beam is 2. Our degree of freedom of this cantilever beam is 2 degree, that is theta 2 and delta 2. In case of dynamic analysis, in case of structural systems subjected to dynamic forces, the deformed shape varies with time. At some instant of time, delta 2 will be higher, delta 2 and theta 2 will be higher. At other instant of time, delta 2 and theta 2 will be smaller. But anyhow, at any instant of time you find the deflection and rotation, you can draw the deformed shape of the system at that instant of time. So this is degree of freedom system. Now there are the other two terms, which is discrete and continuous system. What is continuous system? The continuous system, which is also known as distributed system or distributed mass system, is actually all the structural systems with distributed weight or distributed mass have infinite degree of freedom system. Infinite degree of freedom. आम जो distributed ऐसे सिस्टम, ऐसे structural system जिसमें weight distributed हो तो mass भी distributed होगा, क्योंकि mass जो है weight by acceleration due to gravity. अब ऐसे structural system जिसमें distributed weight हो, जिससे कि ये now this distributed mass can be divided into infinite number of small masses. ये जो distributed mass system है, इसको हम small number of infinite masses में divide कर सकते हैं. Consequently, in order to draw the deformed shape of this system at any instant of time, we need displacement of all the masses. If this is the deformed shape, in order to draw the deformed shape, we need deformation of this small mass. Say this is U1. Deformation or deflection of this small mass, U2, U3, and so on. Since we have divided the mass into infinite number of masses, so theoretically speaking, the degree of freedom of this distributed mass system will be infinite. Such systems are known as distributed mass system or continuous system. In real life, all the structures are distributed mass system.
Now the problem is mathematics deal with finite things, and distributed mass system have infinite degree of freedom system. The problem is how to handle the mathematics of such system. That can be accomplished by either using shape function, which will be described later on, or converting infinite number of masses into finite number of masses. जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इनफाइनाइट है, मैथमेटिक्स जो है वो इनफाइनाइट चीजों को डील नहीं करता, वो फाइनाइट चीजों को डील करता है। तो इसके लिए या तो हम एक शेप फंक्शन जो कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे, जो कि थोड़ा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, या दूसरा तरीका ये कि आप इसको फाइनाइट नंबर ऑफ मासेस में कन्वर्ट कर दें। If the system have finite number of masses, such system is known as discrete or lumped mass system. And how we accomplish that, just to give you an example. Say we divide this beam into 4 parts. Okay. This is point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Let rho is mass per unit length. In total length of the beam is L. So let me ask one question. ये हम मास की बात क्यों कर रहे हैं, वेट की बात क्यों नहीं कर रहे? अगरचे वेट और मास एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हैं, एज फार एज अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व हो, तो हम ये मास की क्यों बात कर रहे हैं? कोई बता सकते? वेट हम क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, इसके अलावा कोई रीजन? सर असल में जो मास है ना सर, वो मटेरियल से रिलेटेड है, और वेट जो है ना सर वो फोर्स है। तो यहाँ पे हम जब डिफरेंट मासेस लेंगे तो सर मटेरियल का जिक्र आएगा सर। एक बीम में सर डिफरेंट मटेरियल लेते हैं ना सर मास, और वेट जो है ना सर वो फोर्स है। तो ये डिफरेंट चीज है सर। इसके अलावा कोई एक्सप्लेन कर सकता है? देखें, अंडर डायनामिक लोड a body experiences acceleration, and due to acceleration, which type of forces are produced? Inertial forces. And inertial force is mass time acceleration. So therefore, in dynamic analysis, we deal with the masses, not with the weight.
As long as we are interested in calculating inertial force, we will deal with the masses instead of weight. ये इसकी वजह है. अच्छा, let rho is the mass per unit length. So what is the total mass of this portion? अगर मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1/4 of the I total. have divided this beam into 4 equal parts. It means each part have a length of L by 4. So what will be the mass of each part? Rho L by 4. Rho L by 4. Rho L by 4. If we use the concept of tributary mass, mass that can be dumped at this point will be rho L by 8. At this point, half of this mass and half of this mass will add, and the total mass will be rho L by 4. Similarly, the total mass will be rho L by 4. Similarly, mass will be rho L by 4. Here the mass will be rho L by 8. Now, if I want to draw the deformed shape of this system, I need deformation of this point, deformation of this point, deformation of this point, and at this point deformation will be 0. So I need 4 deformations: U1, U2, U3, U4. So degree of freedom will be 40. So this is the system where we lump the mass at certain point is known as lump mass system or discrete mass system. Most of the time we perform dynamic analysis by converting distributed mass into lump mass system. Now, what is single degree of freedom system? So as the name implies, if the degree of freedom of a system is 1, that system is single degree of freedom system. If the degree of freedom of a system is 1, that system is known as single degree of freedom system. And in universe, all the systems have a degree of freedom more than 1. So single degree of freedom system does not exist. But in order to understand the dynamic analysis of actual system, we need to master the concepts
related to single degree of freedom system. A simple example of single degree of freedom system is this water tank. Here, this water tank is supported on a hollow concrete tower. This concrete tower is hollow, not solid. So the mass of this portion is negligible as compared to the mass of the tank, which is full of water. So we can consider it as a single degree of freedom system in which the mass is lumped at the top. This is a common example of single degree of freedom system. And as I told you, that the distributed mass system for the purpose of dynamic analysis is either converted into the distributed mass system for the purpose of dynamic analysis is converted into discrete mass system or lumped mass system, and in order to do so we use shape function. Shape function is basically a mathematical function that describes the deformed shape of a distributed mass system, and in this case we have a wall which can be a parapet wall, boundary wall, or even the tower which is supporting the water tank. If the height is h and we use this mathematical function, shape function, that give us that this distributed mass system can be replaced by a lumped mass system with a mass at the top end is equal to 0.227 times rho h, where rho is the mass per unit length. तो अगर इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम जिसका टोटल मास rho into h है और उसके लिए हम ये मैथमेटिकल फंक्शन लेते हैं, तो इस मैथमेटिकल फंक्शन को लेते हुए अगर हम इस एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम को एक कंटिन्यूस मास सिस्टम से रिप्लेस कर लें, एक लम्प्ड मास सिस्टम से रिप्लेस कर लें, तो हमारे पास टॉप एंड पर जो लम्प्ड मास आएगा वो 0.227 रो h होगा, या एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उसका 22.7% होगा. Multiple degree of freedom system or multi-degree of freedom system which are represented by MDOF. If the degree of freedom of a structural system is more than 1, then that structural system is known as multi-degree of freedom system. For example, we have a 2-story building. Now, in order to draw the deformed shape of this 2-story frame, we need deformations at various points. अभी हमने ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट स्टडी किया, तो हमें इसकी डिफॉर्म शेप ड्रा करने के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे? कोई बता सकता है?
इसकी डिफॉर्म शेप ड्रा करने के लिए हमें कितनी डिफॉर्मेशन चाहिए होंगी? सर 4। इस केस में हमें 6 चाहिए होंगी। एक ये रोटेशन, एक ये रोटेशन, ये रोटेशन, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम, the kinematic indeterminacy of this structural system is 6 degrees. However, for the purpose of dynamic analysis, we can lump the mass at the midpoint. डायनामिक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इसके मास को दरमियान में लंप कर सकते हैं। हम इसके मास को, ऊपर वाले मास को यहाँ पर लंप कर दें, नीचे वाले मास को यहाँ पर लंप कर दें, तो हमारे पास इसका जो लंप मास सिस्टम है वो कुछ इस किस्म का होगा। अच्छा, अब लंप मास सिस्टम की डिफॉर्म्ड शेप को ड्रा करने के लिए हमें एक ये डिफॉर्मेशन चाहिए और दूसरी ये डिफॉर्मेशन चाहिए। So therefore, dynamic degree of freedom of this system is 2. For the purpose of dynamic analysis, we need these two deformations. But if you want to perform the static analysis, which you have studied in structural analysis method, stiffness method of structural analysis, in order to perform the static analysis, you need 6 deformations. You can say that the static degree of freedom is 6, but in order to perform dynamic analysis, you need 2 deformation, or you can say dynamic degree of freedom of this structural system is 2. Now the question is why we eliminate the other 4 degree of freedom system. इसको जरा सोचें, उसको जरा फिर बाद में मुझे जवाब दें। Okay, so this is the not your home assignment. This is again exercise. इसको आप सॉल्व करें। अगर कोई बात हो तो नेक्स्ट टाइम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको 3 असाइनमेंट्स दी जाएंगी। पहली असाइनमेंट एट द एंड ऑफ 3rd मॉड्यूल आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर हम एक 20 मिनट का ब्रेक करते हैं। एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट। Various time. Vibration is basically the rapid to and fro motion of an elastic or inelastic system
whose equilibrium position is disturbed. This is vibration. Now, how vibrations occur in a linear elastic system? This can be considered by demonstrating a video. Here you spherical surface. Just as uniform circular motion and simple harmonic motion shape up much the same in nature, the potential energy of harmonic motion can be visualized as a curve shaped like a bowl. This is the schematic diagram of that system. This is the lowest point. Why this shape? Because of the force law and the definition of potential energy. If we disturb, this is the initial position of this body. If we disturb the initial position of this body and we move this body to this point, the kinetic energy of the system is increased. This yellow color shows the kinetic energy. When we release this body, the potential energy start decreasing, but the kinetic energy start increasing by the same amount. You can see The ball starts out. the yellow color potential energy is decreasing, but the blue color the kinetic energy is increasing by the same amount. Some potential energy. And when this body reach the lowest point, the potential energy is zero and the kinetic energy is maximum. As it rolls toward the bottom, the potential energy changes to kinetic energy as it rolls up. And if we ignore the frictional losses, the body will rise on this surface to a same height, and this process will repeat itself forever. But in any case, the total energy remains constant. This is also known as law of conservation of energy. For example, as I told you, at this point, the potential energy is maximum. If we release the body, the potential energy, that is the yellow color, will decrease, but the kinetic energy shown by the blue color will increase by the same. The kinetic energy changes back into potential energy. Over time, there's a continual interchange between kinetic and potential energies. Now, here the transformation of potential and kinetic energy is explained. In case of structural systems, we can idealize structural system as a spring mass system. That is, a mass attached to a spring. If this is the undisturbed position, the energy of the system is zero. But if we stretch this spring in the, if we compress this spring in the upward direction,
if I stretch this spring in the upward direction by an amount u, what will be the strain energy of the system? जरा बताएं कोई strain energy जो है इस सिस्टम में जो स्टोर होगी वो किसके बराबर होगी अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में इलांगेट करता हूं? सर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं रही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है बाय वर्चू ऑफ इट्स हाइट, यहाँ पे अब स्ट्रेन काइनेटिक एनर्जी होगी, या जिसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है या स्ट्रेन एनर्जी भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल सिस्टम में स्ट्रेन एनर्जी जो है वो डिफॉर्मेशन के साथ उसका क्या रिलेशन है? Strain energy will be half Ku square. If you compress the body in the upward direction by an amount U, the strain energy stored in the spring will be half Ku square. If you release this force, the mass will move in the downward direction and the strain kinetic energy will start decreasing, but the kinetic energy will start increasing. And when the body reach its original undisturbed position, the strain kinetic energy will be zero, but the kinetic energy will be maximum. And after this, the mass will move in a downward direction from its undisturbed position, and again the velocity will start decreasing, the kinetic energy will start decreasing, but the strain kinetic energy will start increasing by the same amount. And if we ignore the losses, the mass will move in the downward direction by the same amount. And at that point, since the velocity will be zero, kinetic energy will be zero, but the strain energy will be maximum. And if we ignore the losses, this process will repeat forever. So this is the mechanism due to which the structural system idealized a spring mass system vibrates. Another classification of vibration is periodic and random vibration. Periodic vibrations are those vibrations which repeat itself after equal interval of time. For example, a water tank supported on a tower whose mass is ignored. If the equilibrium position of this water tank is disturbed, it will start moving, and if we record the displacement time variation graph, this will be somewhat like this. The displacement variation is harmonic. We can say that the vibration is harmonic. So harmonic vibration is one type of periodic vibration. But sometimes vibration may not be harmonic, but it is still periodic. You can see in this case the motion of the body is repeated
by same amount of time, though the vibration is not harmonic. So these are two examples of periodic vibration. If there is no relation between displacement and time in a vibrating body like this one, you can see there is no specific relation, just like we saw on the previous slide. Such vibration is known as random vibration. Vibration of structural system subjected to wind or earthquake are typical examples of random vibration. Another classification of vibration is free and forced vibrations. Forced vibration means vibration in a structural system when a dynamic force is acting. In other words, the vibration in the presence of a dynamic force is known as forced vibration. But the vibration in the absence of a dynamic force is known as free vibration. For example, you have during an earthquake, the building vibrates when subjected to seismic waves at the base. Now, as long as the seismic waves are there that exert force on the structural system, and the vibration is known as forced vibration. But even when the seismic wave passes, after the seismic wave passes, there is no force, but the building structures will still vibrate for some time. And that part of the vibration which occurs in the absence of a force are known as free vibration. Here, a video is recorded in Japan in 2011 earthquake. The earthquake is over, but the building is quite high, and you will see that it is still vibrating. Since the earthquake has passed, this vibration is known as free vibration. Another classification of vibration is undamped vibration or damped vibration. Undamped vibrations are those vibrations in which the energy is not dissipated, whereas the damped vibration are those vibrations in which the energy is dissipated. In real life, there is no undamped vibration, because in real life, the vibration diminishes with time due to various type of energy losses. And in real life, we have always damped vibration. That is the vibration
which reduces or diminishes with time due to various types of losses. However, undamped vibration, understanding the undamped vibration is an essential part of dynamic analysis. In actual system, the vibrations are damped vibrations. As I said, that the vibration in which the vibration reduces with the passage of time, and there are various sources of energy dissipation. For example, if a building is subjected to any dynamic force, say earthquake, after the earthquake is passed, the vibration reduces with the passage of time. Again, if you see this video, in this case, the vibration reduces, and after some time the body will be in equilibrium position, and it will not, the vibration will cease after time, and it will be in the static condition. Now, what are the various factors responsible for energy dissipation? There are a lot of factors. The friction of structure with the surrounding structure is one of the reasons which dissipate the energy. The friction of foundation with the underground earth also dissipate energy by friction. Micro cracks that produce in the structure during the earthquake are also another cause which reduces the vibration. There are a number of causes which dissipate energy. Now damping. So damping is a phenomenon as you can see that during the vibration, the specifically when it is free vibration, the vibration reduces with the passage of time due to energy losses. The term damping is used to describe all type of energy losses. So damping is a phenomena that is used to describe all types of energy losses. And as I told you, in structural system there are a lot of factors which contribute to damping. Now it is very difficult to have mathematical models of various damping mechanisms. For example, in a vibrating building, damping can be due to friction at steel connections, opening and closing of micro cracks in concrete, or opening and closing of micro cracks in case there is masonry walls. Then there is a friction between the structure and the non-structural components. There is a friction of foundation with the underlying ground, earth. Now the
it is very difficult to have a mathematical model that captures all the energy losses. All the energy losses are represented by a simple model known as dash part model. Now, what is dash part? We assume, remember, I am focusing on the term is we assume that in buildings or structural system there are imaginary cylinders which are filled with viscous fluid, and there is a piston which is fixed in the cylinder. During the vibration, this piston moves back and forth. Consequently, it develops friction with the viscous fluid, and due to friction of this viscous fluid with the piston, the energy is dissipated. In actual structural systems, there are no dash parts, but in some buildings where it is very essential to reduce the vibration, we provide viscous fluid dampers. That is basically, you can say that it is a type of dash part, but in actual structures we don't have dash part. So you can see this model building, and when its equilibrium position is disturbed, you can see the vibration occurs significantly. In other type of model building, we have viscous fluid dampers, which is a type, you can say, a type of dash. In this case, if you disturb its original position, you can see that the vibration diminishes in very less amount of time. You see? Now both the models are subjected to same amount of shaking, and you can see the response of both models. तो एक्चुअल बिल्डिंग में जिसमें मैंने आपको डैश पार्ट नहीं लगे होते, यहाँ पे इस आइडिया को यहाँ पर विस्कस फ्लूइड डैम्पर्स जो कि अक्सर बिल्डिंग्स में, अक्सर तो नहीं लेकिन बाद बिल्डिंग में फॉरेन कंट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, तो वो शो किए गए। इससे आप डैश पार्ट का जो बिहेवियर आप समझ सकते हैं, जो कि इमेजिनरी चीज है। So in case of buildings, we assume that there are diagonal dash parts, and the vibration of the structural system reduces due to the movement of viscous aisle, which produce friction with the piston arrangement. This is the schematic diagram of a dash part. We have a single story frame. A dash part is
provided and the force developed in the dash part known as damping force is represented by F subscript T. And the relation between the damping force and the velocity is expressed by this mathematical relation. Damping force is C times U dot. U dot is the first derivative of displacement. First derivative of displacement is velocity. So damping force is C times velocity, where C is a viscous is known as viscous damping coefficient. अभी तक जो हमने किया है इससे रिलेटेड कोई सवाल? अच्छा, अगर सवाल नहीं तो आगे हम चलते हैं फिर. Now the dynamic analysis of single degree of freedom system involves two steps. Number one is to develop the equation of motion for a single degree of freedom system. Once we develop the equation of motion, then the second part is to solve the equation of motion. So the first part, that is formulation of equation of motion. Formulation of equation of motion of a system when subjected to a dynamic force P of T. We have a single bay frame. There is a dash part and it is subjected to a dynamic force which varies with time. Now, in order to develop the equation of motion, we have various methods. The commonly used vector mechanics based methods are two. Number one, by applying Newton's second law of motion. The second one is D'Alembert principle of dynamic equilibrium. So first, we will develop equation of motion of a single degree of freedom system using Newton's second law of motion. अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करते हैं तो हम ये करेंगे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे. मिसाल के तौर पे आप इस सेक्शन लाइन से ऊपर जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं. अब आप जब ये नीचे वाला पोर्शन हटा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप उस पोर्शन को रिमूव कर लेंगे, लेकिन उसका जो इंटरनल इफेक्ट है वो आप शो करेंगे. नाउ व्हाट इज द इंटरनल इफेक्ट? वी हैव अ डैम्पिंग फोर्स in the dash part in a direction opposite to that of dynamic force represented by Fd. We have an elastic restoring force in the columns. The columns में हमारे पास एक elastic restoring force develop होगी which will bring the structure back to its original position when the dynamic force is reduced. Now, what is the resultant force in this case? In this case, we have
external dynamic force P of t minus Fd minus Fs. This is the resultant force. According to Newton's second law of motion, this resultant force is responsible for producing acceleration in the body. According to Newton's second law of motion, this resultant force is responsible for producing acceleration in the body, and the corresponding force will be equal to mass time acceleration. Acceleration can be written as second derivative of displacement, and consequently, when this equation is simplified, we get Fs plus Fd plus mu double dot is equal to P of t. Elastic restoring force, which try to bring the structure to its original position, is derived from this definition of stiffness. Stiffness is equal to force per unit displacement. Force is equal to stiffness into displacement. So elastic restoring force can be written as stiffness into displacement. Damping force, as we just discussed, is viscous damping coefficient time velocity plus this. Now this is the equation of motion for this single degree of freedom system developed by using second law, Newton's second law of motion. अच्छा, अब अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. अच्छा, खैर खैरियत है पूरी क्लास में. चलें आगे चलते हैं. Second method is second method to develop the equation of motion of single degree of freedom system is using dynamic equilibrium method. And the method of dynamic equilibrium is based on D'Alembert principle. चूंकि आप शुरू से ही इक्विलिब्रियम के साथ यूज्ड टू हैं, तो लिहाजा ये मेथड जो है समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा और आगे हम इसी मेथड को ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे. According to D'Alembert principle of dynamic equilibrium, a state of dynamic equilibrium can be defined by assuming a fictitious inertial force Fi acting on the mass during the motion. According to D'Alembert principle of dynamic equilibrium, अगर हम this body can be considered in a state of dynamic equilibrium if we add a force, inertial force to the system. तो अब हम equilibrium equation apply कर सकते हैं. In this case, now if we apply an equilibrium, we have Fs plus Fd plus Fi minus P of t is equal to 0. If we rearrange this equation, we get some
type of equation which was derived by using Newton's second law of motion. तो ये प्रोसीजर है इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करने का। आपके कोर्स में बहुत सिंपल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो आपके कोर्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कोर्स की नेचर ऐसा है। अच्छा, डी लंबर्ट प्रिंसिपल को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इफ यू हैव, अगर फॉर एग्जाम्पल you have a body which is placed on a balance which measures the weight। अगर आप एक बॉडी ले लें जो किसी बैलेंस के ऊपर पड़ा हुआ है जो कि उसका वेट मेजर कर रहा है, और ये बॉडी किसी एलिवेटर में आपने रखी हुई है। अब अगर ये एलिवेटर नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 g, तो आपके ख्याल में इसका ये जो बॉडी है इसके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पास कर रही है, या मैं ये कह लूं, एक मिनट चलिए, ये बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगी? चलें ये बता दें, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगी? सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर। नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए है। ये एलिवेशन नीचे की डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है। आप एलिवेटर में खड़े हुए और एलिवेटर नीचे मूव कर रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? नीचे या अपवर्ड? डाउनवर्ड होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आपकी क्लास के साथ टाइम मैनेज करना, अपना टाइम तय करना है, आपका भी टाइम ज़ाया करना है, अपना भी टाइम तय करना है। कोई रिस्पांस नहीं है, सब बिल्कुल हिस्सा के या तो सो रहे हैं या जिंदा नहीं है, बिल्कुल हिस्सा आप लोगों का रिस्पांस है। ठीक है, मैं भी जल्दी इसको खत्म करता हूँ ताकि आपकी भी जान छूटे, बेगम हो जाए। इसका जो है एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, कॉन्सिक्वेंटली वेट जो है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है उससे ये इनर्शियल फोर्स सब्ट्रैक्ट होगी और इसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों एट होंगे, वेट विल इंक्रीज। अच्छा, स्प्रिंग्स जो है इसकी ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ज्यादा आपके साथ दिमाग मारी का कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल जो सोए हुए या
जो बिल्कुल जिंदगी जिनमें ना हो, आप वो लोग हैं, बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है, तो लिहाजा आपके साथ में ज्यादा मानमानी नहीं कर सकते। बाकी क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक में ये हम टॉपिक खत्म करेंगे। आज के लिए काफी।